Good morning students, welcome to online education system. This is a lecture of maths for class 10th. Now topic is trigonometry. And in this lecture we are going to discuss some MCQs type of questions. So our very first question is cot 90 minus theta into sin 90 minus theta upon sin theta plus cot 40 degree upon tan 50 degree minus cos square 20 degree plus now B 1 C minus 1 D none of these. So let's start the solution. Cot 90 minus theta into sin 90 minus theta upon sin theta plus cot 40 degree upon tan 50 degree minus cos square 20 degree plus cos square 70 degree. Okay, this is the question. Now cot 90 minus theta को मैं tan theta लिख सकता हूँ, राइट ना, एंड sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकता हूँ अपॉन sin थीटा प्लस cot 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 50 and then I can write tan 50 degree as it is minus cos square 20 plus cos square 90 minus 20. Okay, now from here what we have, tan theta will be as it is and cos theta upon sin theta कितना हो जाएगा cot theta, तो into cot theta plus cot 90 minus theta होता है tan theta, so it will be tan 50 degree upon tan 50 degree. Now next is what, minus as it is, and here cos square 20 degree plus
cos 90 minus theta equals to sin theta, and so similarly cos square 90 minus theta equals to sin square theta, that is sin square 20 degree. Now we know that tan theta into cot theta equals to 1 होता है, प्लस tan theta upon tan theta equals to 1 हो जाएगा, मीन्स tan 50 से tan 50 कैंसिल 1 बचेगा, राइट। एंड सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से -1 एंड +1 कैंसिल, क्या आ गया आंसर में 1। ओके, सो नेक्स्ट आंसर, that is option B, 1. Okay, next question of the lecture, that is cos 38 degree cosec 52 degree tan 18 degree 35 degree tan 60 degree tan 72 degree tan 55 degree equals to what, right now? So options are A is √3, B 1/3, C 1/√3, D 2/√3. Okay, now let's start the solution. So for solution, what we have, cos 38 degree cosec 52 degree upon tan 18 degree tan 35 degree tan 60 degree tan 72 degree tan 55 degree. Okay, so यहां पर चेंजेस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हुए। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, cos 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 52 डिग्री, या फिर डायरेक्टली ना लिखकर मैं स्टेप्स लिख देता हूं, cos 90 माइनस 52 लिख सकता हूं 38 को, राइट ना, एंड cosec 52 will be as it is, and here what we have, tan 18 degree tan 35 degree tan 60 को मैं क्या लिख सकता हूं √3, एंड tan 72 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 18, एंड दिस इज tan 55 को मैं लिख सकता हूं tan 90 minus 35. Okay, now from here what we have, cos 52 को मैं लिख सकता हूं cos 90 minus theta, that is sin theta, so it will be sin 52
into cosec 52 upon tan 18 एंड ये tan 90 माइनस 18 है, इसको मैं cot 18 यहां पर लिख सकता हूं. सिमिलरली tan 35 एज इट इज, और ये जो आपका tan 90 माइनस 35 था, इट बिकम cot 35 into root 3. So we know that sin theta into cosec theta equals to 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में. अपॉन सिमिलरली tan theta and cot theta equals to 1, तो 1 into root 3. So what we have 1 upon root 3. So your answer is C, 1 upon root 3. Please write down it. Okay, now we'll discuss the next question. The next question of the lecture is if sin 2 theta equals to root 3, then theta equals to what, right now? So your options are A 30 degree, एंड यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है, that is if 2 sin 2 theta equals to root 3, right? Your options are A 30 degree, B 45 degree, C 60 degree, D 90 degree. Okay, now solutions. Now 2 sin 2 theta equals to root 3 and sin 2 theta equals to root 3 upon 2, and root 3 upon 2 कब होता है? sin 60 पर, sin 60 की वैल्यू root 3 upon 2 होती, राइट ना? तो सिमिलरली यहां पर मैं पुट करूंगा, इट इज sin 2 theta equals to sin 60, and from here 2 theta equals to 60 degree and theta equals to 60 upon 2, and from here theta equals to 30 degree. Okay, so यहां से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. ओके, सो योर आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री. Okay, now we'll discuss the next question. So next question of the lecture is if 2 cos 3 theta equals to root 3, equals to 1, then theta equals to what? So let's start solution. Before that, write down the options. Options are 10 degree, B
15 degree, C 20 degree, D 30 degree. Okay, now let's start the solution. Given thing is what? 2 cos 3 theta equals to 1. So from here, cos 3 theta equals to 1 upon 2. Equals to cos 60. Cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होती राइट ना, तो यहाँ से 60 आ गया. एंड फ्रॉम हियर 3 theta equals to 60 degree and theta equals to 60 upon 3 and theta equals to 20 degree. Okay, so your answer is C 20 degree. Now one more question of same kind. That is, if root 3 tan 2 theta minus 3 equals to 0, then theta equals to, now options are 15 degree, B 30 degree, C 45 degree and D 60 degree. So these are the options. Now start the solution. To start the solution, now solution, what we have, root 3 tan theta tan 2 theta equals to 3, because माइनस 3 था जो RHS में जाकर प्लस 3 हो जाएगा राइट ना. एंड फ्रॉम हियर tan 2 theta equals to 3 upon root 3. So from here what we have, tan 2 theta equals to root 3 into root 3. 3 को हम root 3 into root 3 लिख सकते हैं राइट ना, अपॉन root 3. So what we have, tan 2 theta equals to root 3 and from here tan 2 theta equals to tan 60 and 2 theta equals to 60 degree and theta equals to 60 degree upon 2. So what we have, from here theta equals to 30 degree. Okay, so your answer that is
Option B, 30 degree. Okay, so this is the solution. Please write down it. In next lecture, we will discuss some more questions which are related to trigonometry. Thank you very much for watching the video.